Jai Hind students, I am Shashi Kumar Seth. Today I am going to start factor and multiple part 2 of class 6. Clear? Student, in this video we will discuss on what is the HCF and how can you find the HCF. Clear? What is the HCF? The greatest number which is common factor of two or more than number is called their highest common factor, and its short name is the HCF. Clear? And its another name is the greatest common divisor, mean that GCD. Clear? Now I am going to start. How can you find the HCF? Clear? We will find the HCF with the help of two methods. First is a prime factorization and second is a division method. So firstly we will discuss on prime factorization method. Look at here. Our first question is the 84, 98. So firstly you will find the factor of both numbers. 84 divided by 2 we get 2 4 ja 8 and 2 2 ja 4. Clear? 42 divided by 2 we get 21 and 21 divided by 3 we get 7 and 7 divided by 7 we get 1. Clear? And second number is the 98. 98 also divided by 2 we get 49. Clear? And 49 divided by 7 we get 7 and 7 divided by 7 we get 1. Clear? And here you will write here 84 is equal to 2 into 2 3 into 7, 2 into 2 into 3 into 7. Clear? And here 98 is equal to 2 into 7 into 7. Clear? Find the common factor. Clear? Here you can see 2 is a common factor and 7 is a also common factor. That's why you will write it 2 into 7. Clear? And 2 7 ja 14. 14 is your answer and HCF is 40. Clear, students? Now I am going to start next question. Students, see these questions. 144, 252, 630. How can you find the HCF? Look at here. Find the firstly HCF of 144. Clear? And 144 divided by 2, 2 7 ja 14 and 2 2 ja 4, and 72 divided by 2 we get 36 and 2 divided by 36 we get 18 and 2 divided by 18 we get 9 and 9 divided by 3 we get 3 and 3 divided by 3 we get 1. Clear, students? And second is the 252 and 252 divided by 2, 2 1 ja 2 and 2 2 ja 4, 1 carry and 1 and 2, 12, 2 6 ja 12. Clear, student? And 2 6 ja 12, 2 3 ja 6. 63 divided by 3, 2 3 ja 6 and 2 1, 3 2 ja 6. Clear? And 3 1 ja 3. Clear? And 3 7 ja 21 and 7 divided by 7. Clear? And C 630 divided by 2, 2 3 ja 6 and 2 1 ja 2, carry 1, 1 0 10, 2 5 ja 10. Clear? 350 divided by 3, 3 1 ja 3 and here 1 not divided by 2, that's why you will put here 0. Clear? And 1 5 50 and 3 5 ja 50. Clear? Again divided by 3 and 3 3 ja 9
कैरी 1, 1 5 15, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, clear, and 7 1 जा 7. Look at here, and you will write here all factor of 144, 252 and 630 here. Look at here, 144 is equal to 2 into 2 into 2 into 2, 3 into 3, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3, clear, and you will write here 252, 2 into 2 and 3 into 3 and 7, clear. Here 630, 2 into 3 into 3 into 5 into 7, and find the common factor. स्टूडेंट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब है हम यहाँ पर 3 नंबर दिए गए और तीनों नंबर में से वही कॉमन फैक्टर होगा जो सभी जगह होगा, क्लियर. यू कैन सी हियर 2 यहाँ पर है तीनों में, आप यहाँ 2 लिख देंगे, क्लियर. ये 2 है, ये 2, बट यहाँ 2 नहीं, लेफ्ट दिस 2, क्लियर, एंड दिस 2 also left. You will look at here 3 3 3, that's why you write here 3, clear. Again look at here 3 3 3, 7 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो 7 हम लोग लेफ्ट कर देंगे, क्लियर. Look at here 3, that means 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, clear. So HCF is 18, clear student. This is a prime factorization method. Prime factorization method में students हम क्या करते हैं, सारे नंबर को अलग अलग हम क्या करते हैं कि उसको ले लेते हैं और अलग अलग उसका फैक्टर निकालते हैं. फैक्टर निकालने के बाद फिर उसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं. कॉमन फैक्टर के बाद हम क्या करते हैं, सारे नंबर जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वो हमारा एचसीएफ कहलाता है, क्लियर. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिवीजन मेथड, क्लियर. स्टूडेंट सी दिस क्वेश्चन, डिवीजन, क्लियर. 70 and you will write here 58, clear, and 58 divided by 70 one time, clear. You will write here 58 and subtract 70, subtracted from 58 we get 12, clear student. And look at here, again you will divide by this number 58 and 12 4 ja 48, 58 divided by 58 subtracted from 48 we get 10. अब इस 12 को डिवाइड करेंगे हम, 12 10 बन जा 10, कितना बचा 2. अब 2 को हम 10 से डिवाइड करेंगे एंड 2 5 जा 10, और ये हमारा आ गया क्या, HCF, क्लियर स्टूडेंट. दिस इज अ HCF एंड यू विल राइट हियर HCF इक्वल टू 2. तो जैसे हम नॉर्मल में डिवाइड करते हैं बस उससे थोड़ा हट के क्या करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर होता है अगेन उसी का हम डिवाइड करते जाते हैं और लास्ट में जो हमारा बचता है वो हमारा क्या कहलाता है, HCF, क्लियर. सी नेक्स्ट क्वेश्चन.
here 3 number, first, second, third. Clear? देखिए यहाँ पे 658 है और यहाँ पर 948। तो नॉर्मल वे में फर्स्टली हम क्या करते हैं, 1 टाइम लेते हैं 658 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करिए, here 0, that's why you will take 1 carry, 10 subtracted from 8 we get 2, and here 3 again take carry 1, 13 subtracted from 5 we get 8. Clear? And here 8 subtracted from 6 we get 2. Clear? And again you will write this number here. Clear? And you will write here 658, and you will take 2 times. 2 2 is 4 and 2 8 is 16, carry 1, and 2 2 is 4, 4 1 5. Clear? 8 subtracted from 4 we get 4, here 5 and here 6, that's why you will take 1 carry, 15 subtracted from 6 we get 9. Clear? That's right. And you will write here this number 2 8. Clear? And you will, how many number you will take? 3 numbers. Clear? 3 4 12, carry 1, and 3 9 27, and 1 28. So this is your HCF. Clear? And you will write here HCF of 658, 940 is 94. Clear? अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर का हमने फाइंड किया है 94, बट अभी एक नंबर हमारा बचा हुआ है. क्लियर? सो we will find the HCF of 94 and 1128. क्लियर? देखिए बच्चों अब कैसे करते हैं. तो अब हम फिर स्टार्ट करेंगे. अब HCF कैसे निकालेंगे? अब 94 को 1128 से डिवाइड करके निकालेंगे. देखिए हियर 94 1128 1 टाइम्स आप लीजिए 1 carry, and 12 subtracted from 4 we get 8. Clear? And here 10 subtracted from 9 we get 1, and you will write this number here. Clear? Students, अब 94 को हम यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि जब कोई नंबर हम ऊपर से राइट करते हैं HCF में, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को डिवाइड नहीं करते हैं. और इसी से आप क्या करिए, 94 का 2 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 188 आ जाएगा. लुक एट हियर 2 4 जा 8 and 2 9 जा 18. Look at here. And you will write here 2. Clear? So this is your answer. Clear? And finally your HCF is 94. Clear, students? Thank you.